Now I'm talking about genetic counseling. The area of healthcare that offers advice on genetic problems is called genetic counseling, a term introduced by Sheldon Reed in 1940. Genetic counseling is not a technology, but it uses a variety of techniques. It uses a variety of techniques, biochemical, statistical, and physiological, for determination of actual disease. Thus, it play an important role in the welfare of society. Any parent of child who has birth defect or genetic disorders is advised to see a counselor. Counseling is advisable for such person who have a birth defect of genetic disorder or marry late or plan to have children at an age of 35 or older, or have a close relative with a disorder, or contemplating a consanguineous marriage, or have had one or more spontaneous abortion and have ethnic disorders such as sickle cell anemia etc. तो हेल्थ केयर का वो एरिया जहाँ पर जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में सलाह दी जाती है उसे हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। ये टर्म सबसे पहले शेल्डन रीड ने 1940 में दिया था। ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है जेनेटिक काउंसलिंग, जबकि इसमें बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं, बायोकेमिकल, स्टैटिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जिससे कि एक्चुअल जो डिजीज़ है उसका पता लगाया जा सके। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जेनेटिक काउंसलिंग। और कोई भी ऐसे पेरेंट्स जिनको पहले बचपन से में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो बचपन से, उन्हें काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो काउंसलिंग लेने की सलाह उन लोगों को दी जाती है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर बाय बर्थ हो, बचपन से ही कोई ख़ानदानी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है उनको, और या फिर जो 35 के बाद बच्चे जिनके हो रहे हों, जिसकी एज 35 से ऊपर हो लेडी की, या फिर इनके किसी क्लोज रिलेटिव के को कोई डिसऑर्डर हो, कोई बीमारी हो, स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर, और या फिर किसी लेडी के बार बार एबॉर्शन हो जाता हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। Genetic counseling is most helpful for those couple who believe that there may be risk of producing a child with a congenital disease. The genetic counselor identify the defect through amniocentesis and advise the couple accordingly. Moreover, a genetic counselor is helpful for those couple who has always been interested in knowing the sex and sometimes in making a choice about the sex of their baby. The chromosome and preparing karyotype for cell derived from the fetus and floating in this fluid. Recently, such techniques have also been developed which do not require preferential abortion but allow preferential fertilization by male carrying Y chromosome or female carrying X chromosome, determining sperm. However, the technique permitting choice of sex of the baby have been condemned by many as this may disturb the sex ratio, leading to a variety of social problems. However, if used judiciously, this may allow couple to select the children free from sex-linked abnormalities. Thus, genetic counselor is helpful in prenatal diagnosis and in family planning.